And Delhi Pollution Control Committee has filed fresh affidavit before the Supreme Court. Now, the DPCC says that it has taken 3 major steps, which include release of data from study on real-time source appointment and forecasting for advanced air pollution management in Delhi. And it also says that DPCC, in complete compliance of the order dated 7th November, has released the report on 8th November on the official website of the DPCC. Now, the second point that the DPCC mentions is that real-time source apportionment data for the sources of air pollution in Delhi on an ongoing basis. Now, DPCC says that smog towers only reduce 13% pollution. So these are the key points made by the DPCC in the fresh affidavit that it has filed before the Supreme Court. Now we have CNN News 18's Ananya Bhatnagar to decode the fresh affidavit filed by DPCC. Ananya, over to you. Well, remember that the Delhi Pollution Control Committee is something very, very important, a very crucial body when it comes to controlling the pollution in the National Capital Territory of Delhi. And in fact, now a fresh affidavit has been filed by the DPCC with regards to, what steps it has taken. And an important point that comes up in this particular affidavit is with regards to the steps that have been taken. One is that they have released a report on, in fact, the real-time source appointment and forecasting of advanced air pollution, which is also available on the R Asman website, as what has been stated by, in fact, the DPCC. Another big point that now comes up is the reopening of the smog towers. Remember, on the last date of hearing, it was stated that the smog towers, at least in the Connaught Place area, were not functioning, and exactly the Supreme Court was really egged as to why such a thing had happened. Now, answering that, the DPCC has said that those smog towers have been opened, and as suggested by IIT Bombay, which had actually installed those smog towers, the smog towers had to be shut during the monsoon season and had to be opened during the winter season, and that's exactly what has been done. The smog towers have been reopened, but the DPCC says that smog towers are not an effective way to control and curb the pollution, because it is only 13% of that too in a 500-meter radius that affects the smog towers have. And I quote from the affidavit, the DPCC, after considering the interim reports and its own data of pollution level measured by the Air Quality Monitoring Station, had submitted to the government, the smog towers is not making a visible impact in curbing pollution. In fact, the smog towers at the Anand Vihar, which is located next to the AQM station at Anand Vihar, and yet the location has been one of the highest polluting location even after the installation of, in fact, the smog towers, is what the DPCC says. How much of it does find word with the Supreme Court, whether or not the Supreme Court would have certain kind of observation to make on these smog towers, whether the Supreme Court, because remember, on the last occasion, the Supreme Court has summoned the DPCC chief to come in before the topmost court of the country and answer why these smog towers have not been running. So whether or not that happens is something that we'll have to wait and watch for at around 2 to 3 p.m. when the matter actually comes up before a bench headed by Justice Sanjay Kishan Kaur at the Supreme Court of India. All right, Ananya and Nikhil, thank you so much for getting us all those latest details. And now let's listen into some reactions on this story. आज बहुत अच्छा लगा। ये बारिश की वजह से है, जो पोल्यूशन जो है घुल गया है, तो सांस लेने में अच्छा लग रहा है। मौसम बढ़िया है इस समय। वेदर काफी अच्छा हो गया है, और दिनों से लेकर आज जो बारिश हुई है रात को, उसके काफी एक्यूआई लेवल भी अच्छा हो गया है, मौसम भी अच्छा है। और इससे पहले 4 दिन पहले तो इतनी धुंध थी कि मास्क पहन के भी मतलब सांसें सूख रही थी लोगों की। और हम तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये सलाह दे रहे थे कि धूप निकलने के बाद ही बाहर निकलें या घर पर योगा करें, क्योंकि एक्यूआई लेवल इतना डाउन है दिल्ली का, तो मॉर्निंग वॉक का कोई बेनिफिट ही नहीं है उसमें। हम यहाँ पे आए इसलिए थे कि बारिश हो गई, एक तो मौसम बदल गया और पोल्यूशन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया आज यहाँ पे। मतलब मौसम इतना लाजवाब है कि इसका कोई कहना नहीं है। हम ये लगाइए रात भर जाग के अभी इसलिए आगे इंडिया गेट पे मौसम को एंजॉय करने के लिए। हवा साफ है, गर्म चाय पी रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। और देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री विजनलेस मुख्यमंत्री है। जब मैं कहता हूँ उसका कारण है, आज जब दिल्ली को कीमोथेरेपी की जरूरत है, क्योंकि हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं, आप बैंडेज लगा रहे हैं। आप कभी कहते हैं ऑड इवन, कभी कहते हैं रेड लाइट ऑन, कभी ऑफ, कभी कहते हैं हम कितनी बारिश लेके आएंगे। अरे कॉन्क्रीट प्लान क्या है दिल्ली वालों को जरा बता तो दो।
आज सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण दिल्ली का पराली की पंजाब की वजह से पराली आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण प्रदूषण का। लेकिन चूंकि आज की डेट में पंजाब में आपकी सरकार है, इसलिए आप पंजाब की पराली की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी देर से चल रहा है और इसमें जो दिल्ली की पोल्यूशन है जो साल के इस वक्त अक्टूबर एंड नवंबर में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्मॉग और हेज़ का प्रॉब्लम बहुत आता है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि इसमें जो नेबरिंग स्टेट्स हैं दिल्ली के, उनका रिस्पांस लिया जाए और चीफ सेक्रेटरीज जो हैं हरियाणा और पंजाब के और यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पे भी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे एफिडेविट्स फाइल किए जाएं कि इसमें क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं।